Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, take out your book, open page number 87. Today, date is 14/10/2020. I am teaching you chapter number 16, class 3, and the name of your chapter is Weather and Season. Okay. So, student, before starting today topic, let do recapitulation what we have done in our previous video. So student, in previous video we are discussing what is a climate. So I already explained you. See the weather. What is weather? Weather changes from hour to hour, day to day, month to month. Okay, and if the same weather is for few months, then we say it as a season. And what is a climate? Climate refers to the weather conditions that place has over a long period of time for several years. So that is known as a climate. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. जैसे माउंटेन्स एरिया की बात करो तो वहां क्या है, हमेशा से ठंडी ज्यादा होती है. मैक्सिमम वहां कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड क्लाइमेट होता है. ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन्स, then maximum here from many years the climate is hot in this area. Is it clear? So in our previous video we discuss what climate. Now open page number 88. Let's discuss the keywords of this chapter. So first keyword is what is blue. So student, in plains the weather is, especially in the summer season, when we are talking about the summer season, that time the weather is a very hot, and due to high temperature what happened, there is lot of evaporation of water. It means water changes in the form of a vapor, and that form is known as gaseous form of a water. We know that there are three states of water, that is solid, liquid and gas. So in summer season a warm air, a warm wind blow, that is known as loo. And especially student, in the afternoon time the people remains inside their houses to save themselves from this warm air which blow in a summer season, and this warm air is known as loo. Is it clear? Now next is floods. This loo, this is a situation in summer season. Now when there is floods, so this situation is in which season? That is monsoon. Okay, see student, how the floods come.
What is the reason for that? Due to heavy rainfall, what happened? The amount of water increase in the river, and now this water from the river, it come out from the river and it covers the land. ठीक है, जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है बेटा, देन द वाटर लेवल ऑफ द वाटर इन द रिवर इंक्रीज, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है रिवर में. देन व्हाट्स हैपन, दिस वाटर स्टार्ट फ्लोइंग इन द लैंड एरिया. जो रिवर्स के किनारे होते हैं, लैंड एरिया होते हैं ना, सो दिस वाटर covers the land near the river area, and this situation is known as floods, जिसे हिंदी में कहते हैं कि बाढ़ आ गई. पूरे अगल बगल का लैंड जो है, पूरा क्या जमीन जो है पानी में डूब जाती है. तो इस सिचुएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बाढ़ आ जाना. सो दिस इज फ्लड्स. नेक्स्ट, व्हाट इज मॉनसून? So monsoon is a rainy season, and at this time in every part of the country there is rainfall. Is it clear? So what is monsoon? Monsoon is the season of heavy rainfall in different parts of the country. Next is water cycle. So many times I explained you water cycle. It depends upon the two process, that is evaporation and condensation. So due to the what is water cycle, student? See, water is present in three states, that is solid, liquid and gaseous form. Or you directly write it in the form of a gas, solid, liquid and gas. So in solid form it is in the form of a ice, liquid form is a water, and gas form is known as water. Gas form is known as solid, ice, liquid, that is water, and gas, water, vapor. Okay, that is water vapor. Now see student, what happens? Due to the heat of the sun, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So due to the heat of the sun, the water evaporates. It means it change in the form of a gas, which we also say water vapor. Okay, and when it change in the form of a gas, it become very light. It become very light. Now student, what happen? This warm air rises up in the sky, and see student, when this warm air come in touch with the cold air, so what happens? These water vapor condenses. जब ये कूल हो जाएंगे, क्यों? ये वार्म थे इसलिए ये गैस के फॉर्म में थे, वाटर वेपर. When it come in touch with the cold air, then it cools. So when it cools, it again change into the drops of water.
So student, these tiny drops of water join together to form the clouds. In this manner the clouds are forms. And when these small drops of water join to form a big drop, then what's happened? From the clouds it start coming again back to the ground in the form of a rain. But in mountains area where the temperature is very cool, so in such area it also comes in the form of a rain also, and in the form of a snow also. Because in mountains, hills area, the temperature is very low. So in that area it comes from the cloud in the form of a rain also, or in the form of a snow also. That is water cycle, and this process is continuous. And this process is continuous. ये प्रोसेस कभी रुकती नहीं है. कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू, जो प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होती. It never stops. That is your water cycle. Now let's discuss things to remember. What is the first point in the book? Weather is the condition of the atmosphere weather is the condition of the atmosphere of a particular place at a certain time. So student, I have already explained you that weather always change. ठीक है. In the morning temperature is less, but after some time you see the temperature rises. So weather always change. You can say hour to hour, day to day, and month to month. Okay, and of a particular place. ठीक है. हॉट एरियाज वाली जो प्लेसेस होगा उनका वेदर उस वहां के प्लेस के लिए होगा. कोल्ड प्लेसेस का कोल्ड प्लेसेस के हिसाब से होगा. इज इट क्लियर? सो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर. एटमोस्फियर सबको पता है, द लेयर ऑफ अर्थ सराउंडिंग द अर्थ. ठीक है. हमारी अर्थ को एक लेयर ऑफ एयर है जिसने सराउंड कर रखा है, उसी को क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर बोलते हैं. वी से इट एज ए एटमोस्फेयर. सो स्टूडेंट, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एट ए सर्टन टाइम. ठीक है. तो दिस इज द वेदर. नेक्स्ट इज, इफ देयर इज सिमिलर वेदर फॉर वन और मोर मंथ, इट इज कॉल्ड इट सीजन.
Now, so student, the question arises, how the seasons are formed? If the, how you know that we have divided in 1 year there are 12 months and we have divided it into 12 seasons, or sorry, we have divided into 5 seasons. So now student, the question arises, how these seasons are formed? So student, these seasons are formed when the weather remains same for one or more month. किसी पार्टिकुलर प्लेस का वेदर वन या मोर मंथ्स के लिए एक ही जैसा होगा, सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीजन बोलते हैं. इज इट क्लियर? इफ देयर इज सिमिलर वेदर फॉर वन और मोर मंथ, इट इज कॉल्डेड, इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्डेड सीजन. Next, the 5 seasons in year are winter, spring, summer, monsoon and autumn. So what are the name of these seasons? That is winter, summer, spring season. सीक्वेंस में लिख देता हूं जिससे तुम लोग अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहेगा. सीक्वेंस में कर देता हूं, जैसे सीजन चलते हैं उस सीक्वेंस में लिख देता हूं. ऐसे मिक्सअप में लिखूंगा उससे बेटर है कि सीक्वेंस में कर देते हैं. विंटर, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम. ठीक है. अब सब विंटर सीजन, एट दिस टाइम द टेम्परेचर इज लेस and weather is cold. Okay, spring season, when it comes after the winter, there is a very short season. विंटर के बाद जब सर्दियां जाने लगती हैं तो एक शॉर्ट सीजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग. एंड इट इज इन द मंथ ऑफ मार्च. इट इज इन द मंथ ऑफ ए मार्च. एंड वी सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक सरस्वती पूजा. We also see it as a Basant Panchami and Holi festival also in this month. So spring is the time when after winter there is a short season. Winter के बाद एक short season आता है जिसे हम लोग spring बोलते हैं. Okay, now what's happen in the spring season? अब मोस्टली क्या डे और नाइट्स की जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है लगभग लगभग. ठीक है. जैसे विंटर में क्या होता था? विंटर्स में डे बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स बिकम लॉन्गर. ठीक है. सो दिस सीजन इज इन द मंथ ऑफ ए मार्च. आफ्टर दैट फिर समर. अब समर का है क्या? समर इट इज इन, इट बिगिंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इट एंड्स अप इनटू द मंथ ऑफ जून. एंड दिस टाइम द टेम्परेचर इज वेरी हॉट. वेदर इज वेरी हॉट. हाई टेम्परेचर होता है, वेदर बहुत हॉट होता है. एंड स्पेशली इन द प्लेन्स एरिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, स्पेशली इन द प्लेन्स एरिया देयर इज अ वार्म एयर आल्सो ब्लो दिस टाइम विच वी से एज लू. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर नाउ, एंड व्हाट हैपन्स इन द समर सीजन? द डे बिकम लॉन्गर एंड नाउ द नाइट बिकम्स शॉर्टर. समर में क्या हो जाता है? डे बिगर्स हो जाते हैं एंड द नाइट बिकम shorter. This condition is in the month of a summer. And after that monsoon. After monsoon there is after summer season there is a monsoon season. So in this season there is a heavy rainfall
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सारे एरिया, इंडिया तो बहुत बड़ा है, सारे एरिया में हैवी रेनफॉल नहीं होती है, बट इन फ्यू एरिया देर इज वेरी हैवी रेनफॉल in this season, and mostly in this season lot of floods comes in different part of the country. ठीक है, lots of floods come in different part of the country in the month of, in the season of monsoon. Monsoon is also known as season of heavy rainfall. Then after autumn, okay, this season is before the winter. There is a very short season. जैसे इस समय अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर मिड से आपकी क्या आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी विंटर. सो अब ये सुनो, तो बिफोर द विंटर सीजन देर इज वेरी शॉर्ट सीजन विच इज नोन एज ऑटम, एंड दिस इज आल्सो द टाइम व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स. ठीक है, इसलिए इसे हिंदी में पतझड़ का महीना भी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन द लीव्स, व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स. ओके, नाउ सी, एंड दिस इज आल्सो फेमस, दिस autumn season is also famous for very famous for the festival. So in this month we celebrate Dishera, Durga Puja and Diwali. So this is also known as the month of a festival, that is your autumn. Okay, now next point, if a place has next point is, if a place had similar weather for long period of time. If a place has similar weather for long period of time, is called it climate. देखो, whether we are talking about the hot climate places or whether we are talking about the cold places, ठीक है, ठीक है, all five seasons are in all the condition. लेकिन अगर जनरली आपसे कोई पूछे कि बेटा what type of a weather you mostly found in a hillies mountains area, तो आप cold ही बोलोगे, जो कि वहां भी सारे सीजन हम फॉलो कर रहे हैं और प्लेन्स एरिया में भी फॉलो कर रहे हैं. बट प्लेन्स का अगर आपसे मोस्टली कोई पूछे कि प्लेन्स का कैसा क्लाइमेट है, मोस्टली यहाँ क्या होती है, दैट इज वेरी हॉट क्लाइमेट है. सो दिस इज द मीनिंग. सो इफ ए प्लेस हैव सिमिलर वेदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज क्या कहते हैं, क्लाइमेट जल्दी, इट डज नॉट चेंज वेरी फास्ट. ठीक है, हजारों सालों से देखो, हिल्स है, माउंटेन्स है, ये कोल्ड ही है यहाँ, और जो प्लेन्स एरिया है ये क्या है, हॉट एरियाज हैं. इज इट क्लियर? सो these are things to remember of this chapter. After that, student, let's start with the book exercises of the chapter. So question number A, what is this? Tick the correct options. Okay, tick the correct, don't write answer, write option, because option is the right word. So student, these are MCQ question. ऐसे questions को MCQ questions बोलते हैं. See, for the one question there are 4 different answers are given, and we have to choose the right answer. So student, in which season do new leaves grow on the trees and flowers bloom?
In which season do new leaves grow and the flowers bloom? ठीक है. So option are autumn, summer, third is spring. Okay. So autumn, you know very well student, autumn is also known as, in this season plant shed their leaves. ठीक है. प्लांट्स या ट्रीज है उनके पत्ते क्या झड़ते हैं इस सीजन में. तो दिस इज नॉट ए राइट आंसर. इन समर द क्लाइमेट इज वेरी हॉट. समर में क्लाइमेट बहुत हॉट होता है. ओके. सो दिस इज आल्सो नॉट ए राइट आंसर. नाउ स्प्रिंग सीजन. यस, दिस इज द सीजन. इन दिस सीजन द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट होता है. बाई नॉट इट इज वेरी हॉट नॉर इट इज वेरी कोल्ड. ना तो ये ज़्यादा ठंड होती है इस समय, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सो क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट. बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है. किस सीजन में बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है? स्प्रिंग में. और स्प्रिंग में आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, लॉट ऑफ फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं किसमें? स्प्रिंग सीजन में. इज इट क्लियर? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट स्प्रिंग सीजन. Question number 2. In which season is Durga Puja? Durga Puja celebrated. Option A autumn, option B summer, and option C winter. So student, there are in which season is Durga Puja celebrated? So when I explained you about the 5 different seasons of our country, at that time I explained you already that there are 2 seasons which are for a very short time. One is spring and one is the autumn. And spring is also known as the season of festival, because in this month of March, we celebrate Basanta Panchami also. We worship goddess Saraswati, and in this month we also celebrate Holi festival also. In the same manner student, there is one more month which is for a very short time, and that month is known as autumn. And this month is also known as the month of festival, because in this month we celebrate Dishera, Durga Puja and Diwali. So autumn is the right answer. Okay, note down from the board.